हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। इंडिया का विनिंग स्ट्रीक फिर से 12 विंस पे रुक गया है एंड वेरी सैड अबाउट इट। ठीक है, बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बट एट एवरी फेज ऑफ प्ले, इवन इन पावर प्ले, इवन आफ्टर 10 ओवर्स, इवन आफ्टर 15 ओवर्स, वी वर अहेड ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट रियली हर्ट मी इज इंडिया ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं स्काई और सूर्या ने कि हम डर के नहीं खेलते, हम 100 ऑल आउट होने के लिए भी ओके हैं। बट जब फैक्ट आता है, जब इंडिया कोलैप्स की, तो आज वही डिफेंसिव प्ले दिखा जब ओवर पार टोटल मारने की कोई कोशिश नहीं हुई। एंड इट वाज मोस्टली फ्रॉम हार्दिक पांड्या, जो उसको भी रन आउट कर दिया, जो एक बहुत ब्रेव इनिंग्स खेल रहा था। अक्षर पटेल को भी रन आउट करवा दिया उसने, ऑल्दो इट्स नॉट हिज फॉल्ट कि वो स्ट्रेट मारा। इट वाज गुड रिएक्शंस फ्रॉम पीटर, द लेग स्पिनर। बट उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो किया है, मतलब लास्ट 5 ओवर्स में 40 रन भी नहीं बने इंडिया के, एंड लास्ट 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन बने। एंड मुझे समझ नहीं आया कि 6 विकेट गिरने पे ऐसा हो गया जैसे कि हम नंबर 11 के साथ ही बैटिंग कर रहे हैं। वैसा हार्दिक पांड्या ने अर्शदीप को दिखाया। Yeah. ठीक है, अर्शदीप इतना नोन नहीं है, बट ही कुड हिट अ लॉन्ग बॉल टुडे। ही हिट द लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द मैच। इनफैक्ट ही वाज इन गुड रिदम। बांग्लादेश वाली T20 सीरीज में भी अर्शदीप ने एक दो अच्छे सिक्सेस मारे थे, तो हार्दिक उसको थोड़ा ट्रस्ट कर सकता था और Exactly. थोड़ा और स्ट्राइक दे सकता था। एंड हार्दिक, मैं बोलना चाहूंगा प्रतीक, हमने बहुत पहले चैनल में बोला था कि ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द रियल फास्ट Pretty बॉलर्स, bits bowling. अगेंस्ट 140 प्लस पेस ही रियली स्ट्रगल्स, एंड बाउंस को वो मैनेज नहीं कर पाता है। तो आज वही जेराल्ड क्विटजी ने एक्सपोज किया एक तरह से हार्दिक पांड्या को, क्योंकि 9 बॉल में जेराल्ड क्विटजी की 1 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने। Hmm. और लास्ट 2 ओवर्स में तो डॉट्स पे डॉट्स खेले जा रहे थे, सिंगल्स भी नहीं ले पा रहे थे। सो उसी तरफ वहीं जेराल्ड क्विटजी जब आए बैटिंग करने, तो उन्होंने पूरा गेम चेंज And कर दिया। and और that is the वरुण चक्रवर्ती, irony because Stubbs ने कोएट्जी को ट्रस्ट किया जो हार्दिक पांड्या हाँ ने अर्शदीप को ट्रस्ट नहीं किया एंड इन दोनों ने मिलके जो मैच हाँ फिनिश किया that is the irony for this. हाँ। और कोइटजी ने तो मतलब लास्ट मैचेस में भी 2 बड़े ब्लोज मारे थे, 2 बड़े छक्के मारे थे, लेकिन आज उसने अपना पोटेंशियल दिखा दिया। और ऑक्शन के लिए मे बी ही हैज पुट इन नेम एज एन ऑलराउंडर, बिकॉज ही हैज शोन कि ही कैन हिट द लॉन्ग बॉल। एंड मुझे वही लगा यार कि हार्दिक पांड्या को जो हमने वेस्ट इंडीज में देखा, जो उसका सेविंग ग्रेस था, वो T20 वर्ल्ड कप जो उसमें जीता, it was just because of the slow West Indies tracks he was able to win the battle versus Jofra Archer. And also 2 मैचेस ही अच्छा खेला था, एक इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल और एक बांग्लादेश वाला मैच, जहाँ पे मुस्तफिजुर, वो तो वैसे भी फास्ट नहीं डालता है, स्लो ही डालता है, बट ही कुड विन द बैटल But वर्सेस जोफ्रा another आर्चर point is जस्ट Shikhar, बिकॉज he was contributing with the ball which he hasn't done in this series so far. इस सीरीज में तो बहुत ही, मतलब कि देखो आज भी, मतलब कि एक Weak in. प्रेशर ओवर वो डाल रहा था जिसमें उसने 3 वाइड्स डाल दिए ट्रिस्टन स्टब्स को एट अ वेरी क्रूशियल क्रूशियल जंक्चर। वहीं से मैच का मोमेंटम थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया था। एंड अगेन, नॉट ट्रस्टिंग अक्षर पटेल, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब बैटिंग में तुमने ठीक है उसको प्रमोट किया है, बट बॉलिंग तुम उसको दे ही नहीं रहे हो। आज भी मुझे लग रहा था कि बेस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन अक्षर पटेल ही था वहां पे। बट वो नॉन एमआई, नॉन सीएसके, नॉन केकेआर प्लेयर है, तो उसको मतलब आप क्या इतना, एक तो आपने टेस्ट मैचेस नहीं खिलाए और अभी T20 में भी उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हो, तो ये देख के बहुत बुरा And लगा। एंड he's known टुडेज to hit the सेम stumps. गोज He ऑन bowls हार्दिक। very much wicket to wicket, which was needed today. So Akshar Patel could have been a very good change up. Yeah, there were more overs of spin needed today. I feel in that track, in the middle especially. हाँ, ऑल्दो इट वाज अ वेरी फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक, मतलब पोर्ट एलिजाबेथ का जो ग्राउंड है, वो फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मैच, मतलब वरुण और बिश्नोई ने जैसे बॉलिंग की, तो इट लुक लाइक मोर ऑफ अ स्पिनिंग ट्रैक आल्सो। इट वाज एडिंग स्पिनर्स हु वर बॉलिंग फास्ट। तो वही था, अक्षर पटेल को दे सकते थे। एंड लास्ट में वही हार्दिक का एक ओवर जिसमें उसने 3 वाइड्स दे दिया, इट गेव सम कॉन्फिडेंस टू ट्रिस्टन स्टब्स। ऑल्दो साउथ अफ्रीका ने मेजर बुलशिट किया है आज विथ प्रमोटिंग यानसन, जो कि बहुत ही खराब नॉक उसका था यानसन का। मतलब इट वाज द वर्स्ट डिसीजन टेकन बाय एनी क्रिकेट मैनेजमेंट एवर, प्रमोटिंग मार्को Come on, यानसन। man. He started this game. He started domination by bowling in form Sanju Samson. That two double century in back-to-back matches. He got him out for zero. So he already did his job before he could come to bat. Okay. नहीं बट नहीं बट बैटिंग में यार, ही ऑलवेज चोक्स इन दिस मेगा प्रेशर। वी सॉ इन द वर्ल्ड कप फाइनल, लाइक ही Yeah. केम टू बैट, हिज लेग्स वर शेकिंग वर्सेस बुमराह।
इन टेस्ट मैचेस ही गॉट आउट टू बुमराह इन, मतलब कि जहां भी तू वैन मिक्रेन उसे वर्ल्ड कप में आउट कर रहा था. So whenever you know that things are tough, Jansen always chokes, and Yeah, your it criticism created is right. pressure. Because he has performed well when South Africa were scoring 400 in that ODI World Cup, like initial matches. There he was performing really Yeah, well, and already he got a stage like 350 in yeah. 45 overs. Yeah. No, he's a good cricketer. He's a good cricketer. I mean, no doubt on his skills. And like you said, he made the match with those early wickets. Uh, but yeah, man, जैसे उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया क्लासन और मिलर पे भी, जो वैसे भी प्रेशर में चोकर्स क्या जाने जाते हैं, तो आज भी मतलब वो वरुण का एक ओवर जस्ट प्ले आउट करना था क्लासन को, वो भी उससे नहीं हुआ. उसमें भी आउट, दोनों ही आउट हो गए. उसके लास्ट ओवर में उसको फाइफर दे दिया. ऑल्दो फाइफर इन अ लूजिंग कॉज इन T20 इज रेयर, मतलब कि वो भी ऑन अ हैट ट्रिक था, सब कुछ था. बट या मैन, आई एम सैड दैट इंडिया का विनिंग रथ जो था वो अभी रोक दिया है साउथ अफ्रीका ने. बट दैट मेक्स इट फॉर एन इंटरेस्टिंग सीरीज एंड गुड टू सी द साउथ अफ्रीकन क्राउड. मतलब यहाँ पे इंडियन हेवी क्राउड नहीं था, तो पीपल वेर हैविंग बियर एंड दे वर एंजॉयिंग द साउथ अफ्रीकननेस ऑफ एंड प्राउड ऑफ देयर साउथ अफ्रीकन country. So that was good to see, and let's see अब क्या होता है. प्रतीक, you can take this ahead. I have to leave, but मजा आ गया आज का मैच. I think it was a very good. Tristan Stubbs also proved that he can absorb pressure and play well today. Yeah, he's the most improved player. Okay, Shikhar, yeah, I can take it again if you have to go. But yeah, very good match. It could have been even more close. It could have been a proper low-scoring thriller had it not been for Gerald Koitsa and Tristan Stubbs, who finished the match in style. But credit also goes to India, not all the players, but definitely Varun Chakravarti, who made this as a match. Because let's face this, if he would not have picked up Pfeiffer, this would have been a very boring one-sided match. But he made this match to live. Especially it hurts a little bit because if you tell an Indian fan you will get Klaasen and Miller in back-to-back deliveries, how can you lose a match where you get them out, right? So absolutely very good fight by India, when they only had 124 on the board. But South Africa won this one easily. So if we talk about the start, India had a horrible start. I think that's where things went wrong for us. We were 15 for 3, and our decorated top order, Sanju Samson, Abhishek Sharma, Sky, just couldn't adjust to the conditions well, maybe tried to hit too many shots. And for Sanju, obviously the law of averages played his part today. He cannot be scoring 100 in every match. But so yeah, India had a very poor start. But again, they remembered the hero of the World Cup finals, Akshar Patel, and they promoted him. And again, he played a valuable knock. What was not good to see is that he did not get any support. Firstly, he gets run out, which is a horrible way to got out. And then the batters in the lower middle order who followed, Hardik Pandya and Rinku Singh, they could not score big or quick enough. That's a huge problem. Because India started to get some partnerships today, because you can see 30 runs partnership between Akshar and Tilak, and then another 25 runs partnership between Hardik Pandya and Akshar, and then 17 runs partnership, which was the slowest between Rinku and Hardik. So what Akshar has done well in his partnership with Hardik, he was scoring the runs. Hardik was just trying to get settled. He started very slow, 14 of 23. But my question to Hardik Pandya is, like, when Akshar got out, why didn't you take the aggressive role? Because at one point, both Rinku and Hardik were blocking, and we were already past 12 or 13 overs. And that's where the acceleration needed to be started. Because if you remember, India were in the 14th over, they still had 5 wickets to go. So why were you not hitting your sixes already at that point? Why were they not thinking of getting to a respectable total of 140 or 150? And that's where they made his mark. I think it was arrogance of Hardik Pandya, who thought he can score easily like 30, 35 runs in the last 2 overs. But it was a difficult pitch, and South Africans were bowling really well, so it could not happen. एंड वहीं पे इनको मात खाई, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बहुत खराब फिनिश करी आज, जिसको क्रिटिसाइज करना बनता है. बिल्कुल भी शॉट्स लग नहीं रहे थे, और हमने देखा है कभी कभी बहुत बड़े बड़े फिनिशर्स के शॉट नहीं लगते. मुझे MS धोनी का एग्जांपल देना चाहूंगा. MS धोनी को कभी अगर बॉल मिस होता था तो ही वुड इमीडिएटली स्टार्टेड फोकसिंग ऑन टूज, जो हार्दिक पांड्या का दिखा नहीं. MS धोनी का हमेशा स्कोर बोर्ड मूव होता रहता था, बिकॉज ही हैड ऑलवेज दैट ट्रिक कि वो ऐसा स्लोली डैप करते थे बॉल को लेग साइड में और 2 रन काटते थे. हार्दिक पांड्या ने वो बिल्कुल नहीं किया. इट वाज जस्ट डॉट्स डॉट्स डॉट्स. लाइक इट इज रियली एम्बैरेसिंग. बट how many dots did India play in the last 2 overs? I think probably 9 dots in the last 2 overs.
एंड हार्दिक पांड्या स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर रहे थे, सो इंडिया ने डेफिनेटली वहां पे 10 रन कम बनाए। और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि अगर वहां पे हार्दिक पांड्या अच्छा खेलते, 39 और 45 की जगह अगर 50 बनाते 45 बॉल्स में, तो इंडिया शायद ये मैच जीत जाती। बट अगेन क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका, लाइक शिखर सेड, साउथ अफ्रीका ने आज बेटर गेम खेला और उन्होंने बता दिया कि उनको भूख थी जीत की। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये लोग डांट खा के आए फर्स्ट मैच के बाद, जिस तरह से इंटेंसिटी था फील्डिंग में, बॉलिंग इनिंग्स में। एंड देन बैटिंग में जरूर दे लॉस्ट द प्लॉट एट 67 फॉर 6, बट क्रेडिट टू ट्रिस्टन स्टब्स जिसने दिखाया कि वो एक आईपीएल का बड़ा प्लेयर है और उसने एक बहुत ही अच्छा फिनिशिंग किया 47 नॉट आउट। So series 1-1 यहाँ पे हो गया है, and then there will be 2 more matches, guys. Let's see if India can still win this series. They definitely have a good team. They still look favorites to me, but now South Africa has really opened up this series, so it will be interesting. Thank you guys, and please continue to give your love to Cricket Caviar. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।